how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Judiciary. Points to study: the judiciary, roles of the judiciary, independent judiciary, structure of courts in India, access to the courts, what is the role of the police in investigating a crime, first information report FIR, what is the role of the public prosecutor, what is the role of the judge. The judiciary. In India, we have the rule of law. Laws are applied equally to all persons, and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of a mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of the state, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. तो बच्चों, एज ए ऑर्गन ऑफ स्टेट ऐसा कहा जाता है, जुडिशरी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशल रोल प्ले करती है किसी भी इंडिया की डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने में. ठीक है, ये इसलिए रोल प्ले करती है क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट मानी जाती है. रोल ऑफ द जुडिशरी: courts take decision on a very large number of issues. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following: dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two states government, and between the center and the state government. Judicial review: as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. Upholding the law and enforcing fundamental rights: every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. तो बच्चों, जुडिशरी के लॉज के बारे में यहाँ पे बताया गया है. कोर्ट जो होती है वो डिसीजन ले सकती है ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब अगर दो लोगों के बीच में या किसी कंट्री, किसी स्टेट के बीच में या किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो वो से रिजॉल्व कराया जाता है जुडिशियल सिस्टम के थ्रू. जुडिशियल रिव्यू जो होता है एज ए फाइनल इंटरप्रेटर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है जुडिशरी, वो एक पावर रखता है ताकि आप पर्टिकुलर लॉज के बीच को क्या कर सकते हो, स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हो. साथ ही साथ अगर पार्लियामेंट ने कोई रॉन्ग लॉ पास किया है तो इसे भी वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है. किसी भी लॉ को अपहोल्ड करना, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना. अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उसके राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, उसकी अपील कर सकता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी: the control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. One aspect of this independence is the separation of power. This is a key feature of the Constitution. What is this mean here is that other branches of the state like the legislative and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. For the above separation to work well, it is also crucial that all the judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. It is the independence of the judiciary that allow the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a
crucial role in protecting the fundamental right of citizen because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. तो बच्चों ये जो लॉज होते हैं इन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है, ठीक है. आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है वो किसी भी जज के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को सज़ा कम करवाने के लिए या सज़ा से बचने के लिए जजेस वगैरह को ब्राइब वगैरह देते हैं. तो जजेस को जो होते हैं वो टोटली इन लोगों से अलग रखा जाता है. साथ ही साथ जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो भी अलग तरीके से की जाती है. इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. There are 3 different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are called subordinate or district courts. These are usually at the district or tehsil level or in towns and they hear many kind of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court which is highest court of the state. At the top of is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by Supreme Court are binding on all other courts in India. Supreme Court. The Supreme Court is the highest judicial authority of India. It consists of the Chief Justice and 32 other judges. The Parliament may increase the number of judges if it deems necessary. To begin with, besides the Chief Justice, there were only 7 other judges. The Parliament has increased the number of judges from time to time. As in 2024, there are 32 judges beside the Chief Justice, who is also called the Chief Justice of India. The Chief Justice and other judges of Supreme Court are appointed by the President of India. While appointing the Chief Justice, the President is constitutionally required to consult such other judges of the Supreme Court as he deems proper, but outgoing Chief Justice is always consulted. Normally, the senior most judges of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India, although there is no constitutional requirement to do so. While appointing other judges, the President is bound to consult the Chief Justice and other senior judges if he deems proper. Whenever there is a vacancy in Supreme Court, the Chief Justice and 4 other senior most judges consider various names and recommends the name of the persons to be appointed as judges of the Supreme Court. This system is based on a ruling of the Constitutional Bench of a Supreme Court handed down in 1993 and reinforced in 1999. Thus, while the Constitution still provides that the President is the appointing authority of the Supreme Court judge, the ruling of the Supreme Court has since 1999 become virtually binding on the President. The power of selection of judges has passed on to a group of Supreme Court judges called the Collegium of the Court. The President now performs the formality of appointing the nominee of the Supreme Court after the Law Ministry formally recommends these names to him. तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कोर्ट ऑफ इंडिया के. यहाँ पे 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं हर एक कोर्ट के हमारी कंट्री में. यहाँ पे सेवरल कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो लोअर लेवल से अपर लेवल तक आते रहते हैं, ठीक है. ये जो कोर्ट्स होते हैं ये मोस्ट पीपल के थ्रू क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं. इसमें सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी माना जाता है इंडिया का. इसमें आपके चीफ जस्टिस के साथ साथ 32 अलग मेंबर्स होते हैं और जो पार्लियामेंट होती है इसमें आपके नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया जा सकता है अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस जो होते हैं उसमें आपके 7 अदर जजेस होते हैं और जो पार्लियामेंट होती है ये इनके नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है. चीफ जस्टिस जो होता है वो कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस जो होता है वो अदर जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, अपॉइंट करता है और अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है. जबकि किसी भी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो अदर जजेस से भी क्या करता है, कंसल्ट करता है. फिर जो चीफ जस्टिस होता है वो हमेशा कंसल्टेड रहता है और नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ को करने के लिए.
जब भी आपकी वैकेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो चीफ जस्टिस होता है एंड जो फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो कंसीडर करते हैं वेरियस नेम्स, और वो दूसरे पर्सन के नाम भी क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ताकि जजेस को अपॉइंट किया जा सके। हाई कोर्ट, there is a high court for each state. However, there can be a common high court for two or more states. For example, the state of Punjab and Haryana and the union territory structure of government of Chandigarh have a common high court situated at Chandigarh. Similarly, the High Court of Guwahati is common for 7 northeastern states of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Arunachal Pradesh. Delhi, though not a state, has its own separate High Court. Every High Court has a Chief Justice and a number of judges. The number of judges varies from state to state. The number of judges of each High Court is determined by the President. The judges of the High Court are appointed by the President of India. While appointing Chief Justice of High Court, the President has to consult the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state concerned. While appointing other judges, the President consults the Chief Justice of the Supreme Court, the Chief Justice of High Court and Governor of the state concerned. The judges can be transferred from one high court to another by the President. As mentioned earlier, consultation with the Chief Justice of the Supreme Court is in respect of appointment and transfer of the judges of the High Court is also obligatory and binding for the President. While the constitutional state of the President remains intact, the actual selection of judges is made by a team of senior judges of the Supreme Court headed by the Chief Justice of India in accordance with 1993 ruling as interpreted in 1999 by the Supreme Court. This is known as Collegium of the Supreme Court. Its recommendations are binding on the President. तो बच्चों हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है एक ही है पूरे इंडिया में, जो कि दिल्ली में है, लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं ये आपके हर स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है उसका एक ही हाई कोर्ट है, इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दिल्ली जो है ये कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपना हाई कोर्ट है, और हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और नंबर ऑफ़ जजेस होते हैं। ये जो नंबर ऑफ़ जजेस होते हैं ये वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। जो नंबर ऑफ़ जजेस होते हैं ईच कोर्ट के ये डिटरमाइन करते हैं बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के इन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब इन्हें अपॉइंट किया जा रहा होता है तो जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का उससे कंसल्ट करके ही किया जाता है। Subordinate or lower courts in district. Civil courts. The court of the district judge is the highest civil court in a district to deal with civil cases. Very often the same court is called the court of district and sessions judge when it deals with both civil and criminal cases at the district level. The judge of this court is appointed by the governor of the state. Below the court of district judge, there may be one or more courts of sub-judges in the district. Separate family court, which are equal to the court of sub-judge, have been established in district to exclusively hear cases of a family dispute like divorce, custody of children, etc. Below them there are courts of munsifs and small causes courts which decide cases involving petty amounts. No appeal can be made against the decision of the small causes courts. All these courts hear and settle civil disputes. The court of the district judges, called the district court, here not only appeals against the decision of the court of sub-judges, but also some of the cases begin directly in the court of district judge itself. Appeals against the decision of this court may be heard by the High Court of the state. Civil courts deal with cases pertaining to dispute between two or more persons regarding property, divorce, contract, and the breach of agreement or landlord-tenant disputes.
तो बच्चों सिविल कोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंडर, वो आपके हाईएस्ट सिविल कोर्ट्स माने जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। इसमें आपके सेम कोर्ट्स होते हैं जो कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जजेस के अंडर जो कोर्ट आते हैं उनको कहा जाता है। जो कोर्ट जजेस होते हैं इस कोर्ट के, वो डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा, उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उनके नीचे जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, उनके नीचे यहाँ पे आपके एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सब जजेस हो सकते हैं। इसमें आपके सेपरेट फैमिली कोर्ट्स होते हैं जो कि आपके फैमिली मैटर्स को क्या करते हैं, उन डिस्प्यूट्स को ये सुलझाते हैं। जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर, ये आपके अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ जजेस को सुना जाता है। इसमें आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी आपके जजमेंट्स होते हैं उन्हें पास किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज नोन एज अ सेशंस कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। Below this court, there are courts of magistrate of first, second and third class. In metropolitan cities like Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, first class magistrates are called metropolitan magistrates. All these criminal courts are competent to try the accused and to award punishment as sanctioned by law to those who are found guilty of violation of law. Criminals court hear criminal cases which are related to violation of laws. These cases involve theft, diversity, rape, arson, pickpocketing, physical assault, murder, etc. In such cases, the guilty person is awarded punishment. It may be fine, imprisonment, or even death sentence. Normally, every accused is presented by the police before a magistrate. The magistrate can finally dispose of cases of minor crime, but when a magistrate finds prima facie case of serious crime, she may commit the accused to the session courts. This session courts try to accuse who are sent up to them by the magistrate concerned. As mentioned above, an accused who is awarded death sentence by the session courts can be hanged to death only after his sentence is confirmed by the high court. तो बच्चों कुछ कोर्ट्स होते हैं वो आपके फैमिली मैटर्स को देखते हैं, कुछ कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को लेकर के जाते हो, कुछ कोर्ट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स के रिलेटेड होते हैं। क्रिमिनल्स केसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले ले जाए जाते हैं, ठीक है। उसमें जो आपके कोर्ट्स होते हैं इनके नीचे यहाँ पे आपके विक्टिम्स को और आपके जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें साथ में प्रेजेंट किया जाता है। अगर जो क्रिमिनल है अगर वो अपराधी घोषित होता है तो उसको सक्सेसर सजा भी दी जाती है। Revenue courts deal with cases of land revenue in the state. The highest revenue court in the district is Board of Revenue. Under it are the courts of commissioner, collectors, tehsildar and assistant tehsildar. The Board of Revenue hear the final appeals against all the lower revenue courts under it. अब बच्चों हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में। रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं ये डील करते हैं ऐसे केसेस के साथ जो कि लैंड से जुड़े हुए होते हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो इसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो आपके कोर्ट्स ऑफ कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। Access to the courts. In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the court. The courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believe that their rights are being violated, then they can approach through court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. For the common person, access to the courts is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor
believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. तो बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं SS2 कोर्ट्स के बारे में कि कैसे कैसे लोग जो है वो एसेस कर सकते हैं कोर्ट को. प्रिंसिपल में ऑल द सिटीजन्स जो होते हैं इंडिया के वो कोर्ट को एसेस कर सकते हैं एंट्री में. ये इम्प्लाइज करता है कि कोई भी सिटीज़न जो होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है या कोई भी सो कॉल्ड रीज़न से वो कोर्ट के पास जा सकता है. लेकिन पुअर फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि कोर्ट वगैरह का चक्कर जो होता है इसमें आपको डेट्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है और इवन आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो होता है वो खर्च होता है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कॉमन पर्सन जो होता है वो कोर्ट को एसेस कर सकता है और ये जो कोर्ट एक्सरसाइज होती है ये काफ़ी क्रूशल रोल निभाती है इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime, and investigation includes recording statement of witnesses and collecting different kinds of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. This includes the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offences. Article 22 of the Constitution and criminal law guarantees to every arrested person the following fundamental rights: the right to be informed at the time of arrest of the offence for which the person is being arrested, the right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest, the right not to be ill-treated or tortured during the arrest or in custody. Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused. A boy under 15 years of age and human cannot be called to the police station only for questioning. तो बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं पुलिस के रोल के बारे में कि कैसे वो किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है. एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है पुलिस का वो माना जाता है कि वो किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे और साथ ही साथ कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराए. एक इन्वेस्टिगेशन जो होती है इसमें आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी विटनेस के और साथ ही साथ एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है. लेकिन पुलिस जो होती है वो नहीं डिसाइड करती कि कोई भी विक्टिम जो है वो अपराधी है या नहीं. ये काम किसका होता है? ये कोर्ट का काम होता है. पुलिस का काम होता है कि वो FIR दर्ज कराया, वो एविडेंसेस वगैरह को कलेक्ट करे और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेट करेगी कितने लोग उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल 22 के तहत ये बताया गया है कि एक अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. उसको अरेस्ट करने से पहले इन्फॉर्म किया जाए, उसके घर को सर्च करने से पहले उसे सर्च वारंट दिया जाए. ठीक है, और यहाँ पे राइट टू बी इल ट्रीटेड, मतलब उसको अगर पुलिस कस्टडी में रखा गया है तो उसके साथ इल ट्रीट या उसको टॉर्चर ना किया जाए. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR. It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigation into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR wherever a police gives information about a congeniable offence.
This information can be given to the police either orally or in writing. The FIR usually mention the date, time and place of the offence, detail the basic fact of the offence including a description of the events, if known, the identity of the accused persons and witnesses is also mentioned. The FIR also states the name and address of the complainant. There is a prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. अब बच्चों FIR के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। कभी भी कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस के द्वारा उसे क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसका FIR दर्ज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो FIR होती है ये पुलिस इंचार्ज जो होता है वो दर्ज कराता है और साथ ही साथ जो कंप्लेंट होता है ये ओरली या फिर रिटन में इस FIR को दर्ज कराता है। What is the role of the public prosecutor? A criminal offence is regarded as a public wrong. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. In court, it is the public prosecutor who represents the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. She has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the state, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. What is the role of the judge? The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court. The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidence presented and in accordance with the law. If the accused is convicted, then the judge pronounces the statement. He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribe. तो बच्चों पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है ये हम जान लेते हैं। कोर्ट में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो किसी भी स्टेट के इंटरेस्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका रोल जो होता है एक्चुअली बिगन होता है वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, और जब वो चार्ज शीट जो होती है फाइल करती है तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फॉर्म में आता है। जो प्रोसिक्यूटर होता है उससे प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने का पूरा राइट होता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब हम जज के रोल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में एम्पायर होता है वैसे भी जज क्या होता है, एम्पायर होता है। ठीक है, वो जजमेंट देता है और जज जो होता है जो पहले पूरी बात सुनता है विटनेसेस की और एविडेंस वगैरह को भी देखता है जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। उनके बिहाफ पे जज जो है वो डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। कीवर्ड्स: acquit. This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which she was tried for by the court. Eviction. In the context of this chapter, this refers to the removal of person from land, homes that they are currently living in. Volition. In the context of this chapter, it refers both to the act of breaking a law as well as to the breach or infringement of the fundamental rights. Accused. In the context of this chapter, this refers to the person who is tried by the court for a crime. Cross-examine. In the context of this chapter, this refers to the questioning of a witness who has already been examined by the opposing side in order to determine the veracity of her testimony. Detention. In the context of this chapter, this refers to the act of being kept in illegal custody by the police. Offense. Any act that the law defines as a crime. Witness. In the context of this chapter, this refers to the person who is called upon in court to provide a first-hand account of what she has seen, heard or know. Let's recapitulate. The distinct feature of our judiciary is that it has a single, integrated and unified judicial system. The High Court is the highest court in a state. The number of judges varies from state to state. The President appoints them. They hold office up to the age of 62 years. They may be removed earlier by the President on receipt of a request
from both houses of parliament. It has original and appellate jurisdiction. It is the prosecutor of the fundamental rights. It is also court of record and can punish for its contempts. There are 25 high courts for 28 states and 8 union territories. In every district, there are subordinate civil, family, criminal and revenue courts. Appeals against the decision of the lower court are taken to the high court of the states. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.